हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूवर्स ऑफ रीत। आज हम करेंगे मशीन लर्निंग का एक टॉपिक दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो मशीन लर्निंग में हम अपनी मशीन को, जो कि कोई भी एक डिवाइस हो सकता है, उसे हम ट्रेन करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं विद सम डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स कॉल्ड डेटा सेट्स एंड बिल्ड करते हैं एक मॉडल जो कि हमारे लिए प्रिडिक्शंस करता है। अब ये प्रिडिक्शंस करने वाला मॉडल डिपेंड करता है कि आपने जो डेटा प्रोवाइड किया है वो कौन सी क्वालिटी का है। अगर आपका डेटा अच्छा होगा तो आपका मॉडल भी अच्छा होगा और वो प्रिडिक्शंस भी सही करेगा। तो इसीलिए हम करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि हमारे मॉडल की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, यूज़फुलनेस एंड इवन एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। डेटा प्री प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम रॉ डेटा को यूज़ करके उसे यूज़फुल एंड एफिशिएंट फॉर्मेट में हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम जिस डेटा को एनालाइज करेंगे, हमें नहीं पता वो डेटा कितना फॉल्टी है। फर्स्ट फ्लॉ हो सकता है इनकम्प्लीट डेटा। इनकम्प्लीट डेटा का मतलब है कि मेरे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं नल वैल्यूज़, या फिर समटाइम्स हम डिफरेंट सोर्सेज से जब डेटा को एग्रीगेट करते हैं तो हमारी अनमैच्ड वैल्यूज़ जो हैं वो नल रह जाती हैं, तो वो इनकम्प्लीट डेटा को कंट्रीब्यूट करती हैं। द अदर थिंग इज़ इनएक्यूरेट डेटा। इनएक्यूरेट मतलब कि उसमें एरर्स हैं, या फिर मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू है जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डेविएट कर रही है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट 6 घंटे पढ़कर 60 मार्क्स लेके आ रहा है और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटे में ही पढ़कर 60 मार्क्स लेके आ रहा है। तो जो 1 घंटे वाला स्टूडेंट है वो हमारे लिए आउटलायर है, वो एक्सेप्शनल वैल्यू है। तो दैट इज़ इनएक्यूरेट वैल्यू। अदर मेरे पास वैल्यू हो सकती है इनकंसिस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो डेटा डाला है वो करेक्ट तो है, बट वो डिफरेंट फॉर्मेट में है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि समझो मुझसे किसी ने पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हो, तो मैं बोलूँगी कि मैं सीएससी डिपार्टमेंट की हूँ। बट कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो वो डेटा तो करेक्ट है, बट उसका फॉर्मेट डिफरेंट है। दैट इज़ इनकंसिस्टेंट डेटा। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करने से पहले हमें कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए जो हम अपने डेटा सेट पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है पाइथन की, दैट इज़ pandas. So yes, pandas is a Python library which has the application area in data structure operation, that is data frames. तो डेटा फ्रेम्स के ऊपर हम जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे दैट एग्जिस्ट इन pandas लाइब्रेरी। नाउ वाई पांडाज। अब हमारे पास इतना सारा डेटा है, उसे हम एक मॉडल को प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। अब पांडाज लाइब्रेरी को हम यूज़ करके हम उस डेटा को एक फॉर्मेट में बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम्स। अब ये डेटा फ्रेम्स क्या है, ये की डेटा स्ट्रक्चर है जो हम मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल्स या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं एंड अपनी प्रिडिक्शंस इनसाइट्स गेन करते हैं। मेरा जो डेटा है वो सीएसवी या एक्सेल फाइल में हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हम पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करके उस डेटा फ्रेम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सीएसवी फाइल को रीड करना एंड उसे कन्वर्ट करना डेटा फ्रेम में। एंड द अदर थिंग इज़ कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें डेटा टाइप्स कौन कौन सी प्रेजेंट है हमारे डेटा की, एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना बड़ा डेटा सेट है, वो सब देखना। Now let's perform some data pre-processing basics using pandas. So I have opened our favorite VS Code for data pre-processing. You can use Jupyter Notebooks using Anaconda or its web version for the same. Firstly, we will create a new file named data pre-processing with the extension IPYNB, that stands for Interactive Python Notebook, which is also known as Jupyter Notebook. And the CSV file on which we are going to work with is in the same folder where I have created this new pre-processing file. So data pre-processing में the very first step is importing Python libraries. Here I am importing pandas as PD. PD is the alias name. I am also importing NumPy, but you can skip it. It's of no use for now. We can import it later. The second step is to read the CSV file that we have with us. Using pandas, we can use read underscore CSV method. It will also convert the CSV file into data frame. You can see we have this placement.csv.
It is the data which is separated by comma. If we feed this type of data to our model, it will be hard for it to understand. Therefore, we will convert it into a data frame. Data frame is kind of a tabular format in which this data will get stored. I'm storing my data frame in the variable called dataset, and in read underscore CSV, we will pass the name of the CSV file. You can also put the path of the file. So as we have successfully converted our file, we will print it by writing dataset. So if you run it, you can see we have this much of data in which we have 215 rows and 9 columns. But I don't need 215 rows for just to review the data, whereas 3 to 5 rows can be used. So for this, I will use dataset.head method. This will print a few rows from the top of the data frame. Similarly, if I want to print from the last of the dataset, I will use tail method. By default, head and tail will print 5 rows. The next method we have is copy. It will return a copy of the dataset and we can store it in some another variable. Now this df variable can be used in place of dataset. The next function is actually an attribute. It will help you to print the column names of the data frame. So you can see we have the column names, gender, degree percentage, work experience, etc. Next we have is D types. It will print the data type of all the column names. So you can check which of the features have categorical values and which of them are numeric. The another useful method we have is info. It will print the column names, the size of the file, name of the file, the entries, not null values, and the data type also. We have this unnamed feature which is useless, so we will remove it later. Also, you can see the not null values. So, for example, in specialization, there are 211 not null values. Rest 4 are null values. We need to remove them. The next attribute come method is describe. If you use it as an attribute, it will print all the data set. But if you use it as a method, it will calculate some statistical values of the numeric data type features. As you can see, we got count, mean, standard deviation. So in count, we got the not null values. The next attribute we have is shape. Shape will print the dimensions of our data frame. Duplicacy really is a problem. So to remove duplicacy, we have this function drop duplicates. It will delete all the duplicate values. But here there is no duplicacy. As we saw, our data has some null values. So to check that we have our function is null, it will print the boolean value true or false. True for if it is a null value, but I don't want all these true and false values. I just want to count how many not null or are null, suppose. So for that I can use sum function with, as I type df.isNull.sum, we get the count of the null values in our data set. So these are the missing values we have to handle to get a good model. That we will do in our next video. If you are still here, please like the video and subscribe to the channel.